Hello everyone, I am 𝗍𝗂𝗃 and today we are going to look at the 9th edition of our weekly current affairs initiative. And in today's story, we are going to see about the world's top cooperative. Before coming to this story, let's solve some MCQs, look at some MCQs. These are based on whatever we have already studied in the last lecture. Okay, so the first question is, which private Indian company is scheduled to conduct India's first private ever commercial satellite launch? There are 4 options. Option A, ISRO. Option B, SkyRoot Aerospace, Agnikul Cosmos and Pixel. So we have already studied about this. ISRO is not the organization, it's not a private organization. ISRO is run by the government. It is SkyRoot Aerospace. Agnikul is also a private organization, but it is not the one which is launching India's first ever private commercial satellite, and not the Pixel. So it is option B. Next question is, which city is, where is the headquarters of ISRO essentially? So it's not Hyderabad, not Delhi, not Mumbai, it is Bengaluru. Who is the incumbent chairman of ISRO? This is from current affairs. So the correct answer is none of the above. None of the names is the incumbent chairman of ISRO. Vikram Sarabhai was the father of Indian space program. Sir Somnath was the former chairperson, not Radhakrishnan, not Ramnathan. It is Mr. V. Narayanan. Mr. V. Narayanan is the incumbent chairman of ISRO. Okay. Who was the founding father of Indian space program? We have already discussed it. Dr. Vikram Sarabhai is considered as the father of Indian space program due to his immense contribution in the initial phases of our Indian space policy making and Indian space program. I have also suggested a documentary named Rocket Boys to you. It is on Sony Live. The web series tells us the story about Dr. Sarabhai and Dr. Homi Jahangir Baba, who is also called as the father of Indian nuclear program. So please watch it whenever you find time. Okay. Next question is, which of the following companies is based in India? These are some private space-based companies, space-based commercial companies, and the question is asking which is based in India. So SpaceX is based in USA. It is run by Elon Musk. Everybody is well aware about the SpaceX. Blue Origin is also based in USA. It is run by Mr. Jeff Bezos. SkyRoot is based in India. Roscosmos is the Russia's government space agency. It is Russian equivalent to ISRO and Russian equivalent to NASA. Okay. So the answer is option C, SkyRoot Aerospace. Coming to the next question. Reliance Industries Limited belongs to which sector primarily? So it is not an IT company. It is an oil and gas petrochemical sector company. It is an oil refinery company. It is not related to banking and finance, not related to automobile and manufacturing. The Reliance Group might be running the other businesses as well, but Reliance Industries Limited is primarily an oil and gas company. Okay. Who is the CEO of NVIDIA? We have discussed NVIDIA in the last lecture as well, because it was in the current affairs due to because it has crossed the 4 trillion market capitalization, because it has become the most valuable company in the world currently. So what has been asked here? Who is the CEO of NVIDIA, the first company to cross 4 trillion market cap? Not Tim Cook, related to Apple. Satya Nadella, related to Microsoft. Sundar Pichai, Alphabet, or Google. It is option C, Jensen Huang. Okay. Now finally, we are looking at the primary story that we are going to cover. Amul ranks as the world's top cooperative in GDP per capita.
So we have already heard about the Amul. Let's first discuss what is a cooperative. So it is given that cooperative is a voluntary democratic association that meets shared economic, social and cultural needs through a jointly owned enterprise based on the one member, one vote principle. So essentially a cooperative is a kind of organization in which every contributor is an owner as well. There is not a single owner. Okay. For example, let's say if there are 100,000 farmers in all over India, and instead of selling their dairy product individually, there are 100,000 dairy farmers, and instead of selling their products individually, they decided to pool all their resources to create a one big national level brand such as Amul. Now they can reach outside their regional market as well. Now they can make larger profits. Now they can make more products, such as they can produce whey protein, cheese, butter, lassi, etc., etc. So this kind of voluntary organization, which is democratic in nature, is called as a cooperative. Amul is a good example of cooperative. It is a milk cooperative. For example, I am taking this lecture from Indore, Madhya Pradesh. Here is also a famous brand, 𝘖cie. This is also a milk cooperative. There can be various kinds of cooperatives such as milk cooperative, agricultural cooperative, or banking finance cooperative. In Madhya Pradesh only, there is a bank called as 𝗪𝗲𝗃𝗃 Bank. It is a finance cooperative. So these are some prominent examples of cooperatives. आगे भी कुछ लिखा है, जैसे in India the movement began in late 19th century to curb rural debt and exploitation marked by the Cooperative Acts of 1904. तो ब्रिटिश टाइम्स के समय से ही ये कोऑपरेटिव का काम शुरू हो गया था. Let's look at the current affair story first. It is written that the Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation, GCMMF, which markets dairy products under the Amul brand, has been ranked number 1 cooperative in the world based on GDP per capita performance, according to the International Cooperative Alliance. I want you to search about this 𝗖𝗍. Where is its headquarters? Here, its headquarters is in Belgium, Brussels. But read about it a little bit. In the next lecture, I'm going to ask about this as well in the MCQs. Okay, moving forward, empowering 36 lakh milk producers through 18,600 village dairy cooperatives. So Amul is this big. Okay. From this point, we can see that cooperatives in India have a constitutional status now. The 97th Constitutional Amendment Act 2011 granted constitutional status to cooperatives. Now it is a fundamental right under Article 19 subclause 1 to form cooperatives. It is also under Directive Principles of State Policy in Article 43B something, and under Part 9B as well. So now it is a constitutional fundamental right to form a cooperative. India has around 8.42 lakh cooperatives with 29 crore members. Maharashtra alone has over 1/4 of cooperatives. तो इंडिया के सारे cooperatives अगर 100% है तो 25% सिर्फ महाराष्ट्र में ही है. Important data है. In fact, कुछ लोग अगर CMAT की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं या CAT के थ्रू भी शायद IRMA मिलता होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, तो ये भी आनंद में ही, गुजरात में ही लोकेटेड है. अमूल ही इसको फंड करता है, स्पॉन्सर करता है. और यहाँ से IRMA से पढ़ने के बाद, रूरल मैनेजमेंट पढ़ने के बाद आप इन किसी कोऑपरेटिव्स में ज्वाइन कर सकते हैं. एंड लास्टली, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ डेजिग्नेटेड ईयर 2025. द करंट ईयर इज डेजिग्नेटेड एज द ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Coming to the national affairs, recently our armed forces, our security forces has decided to employ indigenous Indian breeds of dogs in the armed forces. So
It is written that Indian dog breeds in national security. The PM Prime Minister reviewed progress since his earlier appeal to promote indigenous dog breeds. ये हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का भी पार्ट है. याद रखिएगा. कुछ और भी बातें लिखी है. फॉर एग्जांपल BSF कुछ स्पेसिफिक जो टेकानपुर सेंटर जो है BSF का, वो कुछ स्पेसिफिक ब्रीड्स को एम्प्लॉय कर रहा है. फॉर एग्जांपल रामपुर हाउंड्स एंड मडोल हाउंड्स. एंड बेंगलुरु CRPF इज ऑल्सो एम्प्लॉइंग सम इंडिजिनस ब्रीड्स सच एज mongrels, कोम्बाई, मुढोल्स एटसेट्रा. BSF now assigns Indian names to dogs symbolizing pride in local breeds. So earlier we used to import the international breeds such as German Shepherds, specifically German Shepherds, but now we are relying more on the indigenous breeds. मैंने कहीं पे जब मैं ये करंट अफेयर्स का कोई वीडियो भी देख रहा था न्यूज़ में, तो कमेंट्स में एक जगह लिखा हुआ था कि डोगेश भाई ने तो अब ध्रुव राठी की नौकरी भी खा ली है. तो नो ऑफेंस टू राठी साहब, बट इट वाज फनी. नाउ कमिंग टू द इंटरनेशनल अफेयर्स. लास्टली हमारे पास जो आखिरी हेडिंग है वो ब्रिक्स पे के बारे में है. इट सेज कि about BRICS Pay, a bid to reduce SWIFT dependence. SWIFT is an international monetary transaction system. It is based in Belgium and it is primarily controlled by the West. है ना? As per the dollarized economy, it is primarily controlled by the West and specifically USA. So BRICS जो है वो एशियन रीजन जो है, ईस्टर्न वर्ल्ड जो है, उनको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र में थोड़ी ज़्यादा कंट्रोल दे सकता है, क्योंकि ये स्विफ्ट के ऑल्टरनेटिव के जैसा काम कर सकता है. लिखा है बिड टू रिड्यूस स्विफ्ट डिपेंडेंस. और ब्रिक्स पे के बारे में आगे बात लिखी है. इट इज़ अ प्रपोज्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम्स टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड फाइनेंस ट्रांजैक्शंस अमॉन्ग ब्रिक्स मेंबर्स. तो हम ब्रिक्स के बारे में ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं. ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका उसके नाम में ही है. उसके अलावा भी कुछ और भी कंट्रीज़ हैं, 5 और हैं. पता करके रखिएगा 5 कौन कौन सी हैं. हम एक बार ऑलरेडी ब्रिक्स पढ़ चुके हैं इसके पहले. ओके. यूजिंग लोकल करेंसीज. तो यहाँ पे डॉलर ना यूज़ करते हुए, यूरो ना यूज़ करते हुए, दे आर यूजिंग लोकल करेंसी सच एज इंडियन रुपी और रशियन रूबल और चाइनीज़ करेंसी, देयर बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन सिस्टम्स लाइक स्विफ्ट एंड दी USD. सो दिस Eastern bloc, mainly consisting of India, Russia, China, they are trying to be self-sufficient in this sector as well, and they are trying to fight the dollarization of economy. Let's see what is SWIFT as well. So it is founded in 1973 and based in Belgium. SWIFT is a secure global messaging network. It is essentially a messaging network. ये आपको डेटा इधर से उधर पहुंचाने में मदद कराता है ट्रांजैक्शंस का, ना कि ये एक्चुअल ट्रांजैक्शंस कराता है. ये सिर्फ मैसेजेस इधर से उधर पहुंचा सकता है, उसी के थ्रू रिकॉर्ड कीपिंग के जैसा है ना. तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस क्या है? कुछ नहीं है, रिकॉर्ड कीपिंग है खाली. मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में 200 रुपये गए, आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में 100 रुपये आए. नेट अभी भी -1000 में हिसाब है, -100 में हिसाब है. बस ये रिकॉर्ड कीपिंग होता है. ट्रांजैक्शन ऐसे ही होते हैं आजकल डिजिटली. ठीक है. यूज्ड बाय ओवर 11,500 इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द ग्लोब एंड मोर देन 200 कंट्रीज. तो लगभग पूरी दुनिया ही जो है वो स्विफ्ट यूज़ करती है फिलहाल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए. अभी रिसेंटली स्विफ्ट वापस न्यूज़ में था जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट ही हुआ था. तब US ने और वेस्ट ने सैंक्शंस लगाते समय पे रशिया को स्विफ्ट से भी बाहर कर दिया था. तो ऐसा वेस्ट की मनमानी से किसी और एशियन कंट्री के साथ में, किसी और ईस्टर्न वर्ल्ड कंट्री के साथ में ना हो, इसीलिए हम एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं जो कि है ब्रिक्स पे. ठीक है. और कुछ बात और लिखी है. टू ट्रांसमिट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर. ठीक है. आज के लिए सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तब ये सब आप पढ़ के रखेंगे. इसके बियॉन्ड भी थोड़ा सा पढ़ के रखेंगे खुद से. जो हमने पढ़ा है इन्हीं को लीड्स कंसीडर करके, इसी को थोड़ा सर्च करके, और अगर आप बिल्ड कर लेंगे इन्फॉर्मेशन तो आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत काम करेगा और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम करेगा.
तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक ख्याल रखें एंड कीप लर्निंग।